Hello, you're watching Hornbill TV's Prime Time, and now the headlines. US President Donald Trump received a standing ovation and a high "world needs more Trumps" praise from Israeli lawmakers ahead of his speech to parliament as Hamas released 20 remaining hostages as part of a breakthrough Gaza ceasefire deal. At least 10 members of the Tehreek-e-Labbaik Pakistan were killed in Lahore after paramilitary rangers opened fire on protesters early Monday morning. West Bengal police have arrested the fifth accused in connection with the alleged Durgapur gang rape case, Asansol Durgapur Police Commissionerate said on Monday. In the latest development in the probe into singer Zubeen Garg's death, 3 Assamese NRIs from Singapore, Jolongsat Narzari, Parikshit Sharma and Siddhartha Bora appeared before the CID office in Guwahati today. And now the news indeed. US President Donald Trump received a standing ovation and a high "world needs more Trumps" praise from Israeli lawmakers ahead of his speech to parliament as Hamas released 20 remaining hostages as part of a breakthrough Gaza ceasefire deal. Trump, who is on a brief visit to Israel, arrived on Air Force One to a red carpet in Tel Aviv on Monday. After his address at Israel's parliament in Jerusalem on his plans for the Middle East peace, he will head to Egypt for a ceremony to make the ceasefire plan. The applause lasted several minutes as lawmakers clapped and cheered Trump, who was accompanied by Special Envoy Steve Witkoff, son-in-law Jared Kushner, and daughter Ivanka. Israeli PM Benjamin Netanyahu nominates US President Donald Trump for the Israel Prize, Israel's highest prize. Mr. President, thank you for all you have done for us. I have submitted your nomination to be the first non-Israeli recipient of the Israel Prize, Israel's highest award. As to that other prize, just a question of time, you'll get it. But I want you to get the Israel Prize, our highest award, to our greatest friend. Taking out Qasem Soleimani, the architect of death, I think that changed the balance of power in the world. You brought America back again to the driver's seat. Now, I said that we're going to read this week the book of Ecclesiastes. It's not a book of action. It's a book of meditations, of thought, a perspective on life and on death. And in this book, we read the immortal words of King Solomon. To everything there is a season, and a time for every matter under heaven. Et milchama ve'et shalom. A time for peace and a time for war. The last 2 years have been a time of war. The coming years will hopefully be a time for peace. Peace inside Israel and peace outside Israel. I look forward to continuing marching with you on the path we paved together with the Abraham Accords. Under your leadership, we can forge new peace treaties with Arab countries in the region
and Muslim countries beyond the region. Abraham's children will work together to build a better future, a future that will unite civilization against barbarism, light against darkness, and hope against despair. And my friends, I believe that with President Trump's leadership, this will happen a lot faster than people. US President Donald Trump delivered remarks to the Knesset in Israel, Jerusalem. He said that after 2 harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the embrace of their families. Embrace of their families, and it is glorious. 28 more precious loved ones are coming home at last to rest in this sacred soil for all of time. And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity. This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. I want to express my gratitude to a man of exceptional courage and patriotism whose partnership did so much to make this momentous day possible. You know who I'm talking about. There's only one, Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bibi, please stand up. And he is not easy, I want to tell you. He's not the easiest guy to deal with, but that's what makes him great. That's what makes him great. In Jorhat, a 21-year-old youth, Pritam Datta, who had been accused of involvement in a theft case, died by suicide while in police custody. According to reports, Pritam was arrested and lodged at the Jorhat police station lockup, where he allegedly took his own life inside the toilet by tying a blanket round his neck. Following the incident, the victim's family filed an FIR, prompting a departmental inquiry. Jorhat Superintendent of Police later addressed the media, announcing that the additional SP of Sivsagar district has been assigned to conduct a detailed investigation into the incident. The SP further informed that Pritam Datta's post-mortem will be conducted in the presence of 3 doctors and the entire process will be video recorded to ensure transparency. Suri case register hoisile Jorhat PS case number 521 of 25 under section 331(4) 305 subsection A BNS aru he case samkrante agent Asami Pritam Datta 22 বছর তেও কাইলে রাতিপুৱা 3টা বজাত अरेस्ट करी जोरहाट थाना आना होइसिले आयो हमारा से कुमुद गुंदिया फुकन ASI तेও हिटू अक्यूजर अरेस्ट करी यात आनी आरु जोरहाट लॉकअपत राखिसिले at 3 AM in the morning तार पिছত हमार सेंट्री जीवने आसिले तेও at 7:26 AM तेও खबर लले तेतिया हे आसामीजन कॉलेज तेও माने चा खुआ बिसारिसिले आरु सेंट्रीजन माने चा हुदिबोले सालेजेस बेलेग जिमा आनी स्टाफ आसिले तेও लोक कॉलेजेस आज आनिबो लागे आरु हे अक्यूजन हे हमें लॉकअपत जे बाथरूम आछे हे बाथरूम फाले गुजि गोल तार पिছত आको आमार सेंट्री at 7:38 AM जेतिया चेक करिले तेतिया तेও माने लॉकअपत नासिले तो तेও लॉकअपत हुमाय भितरत गोल बाथरूमत चेक करिले बाथरूमत 3टा बजा माजुते तेও लोके मेडिकल कराय आनिसे मेडिकल कॉलेजत गोल तार मेडिकल कराय यात आनिसे 3-4 ঘণ্টা সময় সেইখন সময় লাগিলে আৰু ইয়াত যিজন ইমাৰ্জেন্সি অফিচাৰ আছিল তেওঁ সেই বিষয়টো পূৰ্বে কৈছিল নে
ইয়াত যে সেই তেনেধৰণে আছামী এজন থৈ দিয়া হৈছিল সেইটো যি অফিচাৰ আনে তেওঁ ইমিডিয়েটলি সেন্ট্রি ইমার্জেন্সি অফিসার জনায় তো সেইটো স্যার एक्चुअली আমাৰ যি আউটপোস্টত আছে আউটপোস্টৰ যি সিসিটিভি আছে সেইটো সেন্ট্রালি সার্ভার নহয় কিন্তু থানাত যিমান সিসিটিভি আছে এই সিসিটিভি গুৱাহাটীতো ৰেকৰ্ড সেইটো সিসিটিভি ট্যাম্পারিং কৰা চান্স নাই এই কাৰণে এটা আমাৰ এসওপি আছে যে ৰাতি যদি আমি অভিযুক্তক ৰাখো সেইটো আউটপোস্টত না ৰাখো থানাতে ৰাখো এতিয়া আমাৰ প্ৰাথমিক তদন্তত কি ওলাইছে মানে তেওঁ আপোনালোকৰ সুইচাইড কৰিছে নে মানে হ্যাঙ্গিং কন্ডিশনত হোৱা গৈছে আৰু ডক্টৰে যি ইনকুৱেষ্ট ৰিপৰ্ট আমি পালো তাত যি ইঞ্জুৰি মাৰ্ক আছে সেইটো লেগেচাৰ মাৰ্কে আছে তাৰ বাহিৰে যিমান ইঞ্জুৰি মাৰ্ক আছে পুৰণা ইঞ্জুৰি মাৰ্ক আছে নতুন ইঞ্জুৰি মাৰ্ক হোৱা নাই লেগেচাৰ মাৰ্ক আমি পাইছো বাকি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে পিএম ৰিপৰ্ট পিছত আমি ভালকে আমি নহয় বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা কৰিব গৈছো এফআইআর ৰেজিষ্টাৰ হৈছে এই এফআইআৰ নাম এই কেছটোৰ লগত বৰ্ণালী নহয় এতিয়া তদন্তত তেওঁ জড়িত হৈ আছে তেনেধৰণে বৰ্ণালী নহয় We'll be right back after a short break, so stay tuned for more news. तुम्हारा नाम क्या है? HIV can infect anyone, including children. A woman with HIV can spread it to her baby during pregnancy, delivery, or breastfeeding. तुम्हारा नाम क्या है? Welcome back. Tripura Motha, the junior partner in Tripura's BJP-led coalition government, on Monday declared its goal of installing a chief minister from the state's indigenous community after the 2028 assembly elections. Party founder and royal scion Pradyot Kishore Dev Burman said it was time for a tribal leader to head the state, stressing that self-representation would ensure greater legislative autonomy. Speaking at a joining program at Rabindra Satabarshiki Bhavan, Dev Burman cited the unresolved Kokborok Roman script issue as an example of dependence on Delhi. He accused sections of the BJP of delaying Tripura Motha's demands and said the party would now fight electorally to achieve its goals. Tripura last had a tribal chief minister in 1998 when veteran CPIM leader Dasarath Deb held office, announcing plans to contest the upcoming Tripura tribal area autonomous district council elections independently. Dev Burman said national parties would not be allowed in the council polls, though Tripura Motha was open to an alliance with IPFT. Over 1,000 workers from different parties joined Tripura Motha during the event. 15 से 20 मिनट देना पड़ेगा কথা বলে বাংলাতে কেন বলে না আমি পারপাসলি আমি বাংলাতে এই কথা বলছি কারণ এই আমি আপনার না ওনাদের শুনতে হবে আমি কি বলছি এইভাবে রাজনীতি করলে ভালো হয় না হাত মিলাইয়ে না খালসা করিয়ে না আই এম রেডি কেন আপনি যেই ত্রিপুরা যে সময় कुमिल्ला मोथा के लिए नहीं अपना बच्चा लोगों के लिए जीतना है कि नहीं उसके बाद क्या जीतना है पीछे लोग बोलो ऊपर वाले लोग क्या जीतना है आपको खुद का अपना बुकुंबारा मुख्यमंत्री होना पड़ेगा तभी आपको आपका लैंड का अधिकार मिलेगा मैं आज इमोशनल होकर बात नहीं कर रहा हूं मैंने देखा असली में रंजीत रविंद्र बाबू एक्चुअली मैं समझ गया हूं कि इनको क्या है
जो इनको हमसे चाहिए। रुनिल, वो पानी सागर में थोड़े दिन पहले रांगलोग ने मुझे फोन किया, महाराजा आमार जे हा आछे आमार जे জায়গা আছে ডিএমএ নোটিশ আইছে আমার জায়গা নিয়ে যাব। এই জায়গাতে এই গ্রামে তো আমি 100 সাল হয়ে গেছে, আর আজকে বলে কি নতুন নতুন টাউনশিপ হবে, নতুন টাউনশিপে আমার জায়গা নিয়ে যাবে, আমার 1 টাকা দিয়ে যাবে না, কেন কি আমার পাস পাট্টা নেই, এই তো খাস ল্যান্ড আছে। আর ডিএম বলছে কি তোমার কিছু টাকা পাওয়া যাবে না, এই জায়গাতে নতুন টাউন হবে। নতুন টাউনে কে থাকবে? মলসম থাকবে, রিয়াং থাকবে, রাংলং চরে দারলং থাকবে না, বাইরের মানুষ থাকবে। কেন কি 6 শিডিউল এরিয়াতে উনি ডাইরেক্টলি জায়গা তো কিনতে পারে না, তো থ্রু রাজ্য সরকারের থ্রু ডিএম এর থ্রু উনি আমার জায়গা নিতে চায়। কেন কি ওনাদের উপরে অনেক প্রেশার আছে কি জায়গা কম হচ্ছে, আগরতলাতে উদয়পুরে জায়গা কম আছে, ধর্মনগরে জায়গা কম আছে, কৈলাস শহরে কম আছে। आज ज्वाइनिंग प्रोग्राम है, बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्या उद्देश्य है ज्वाइन करने के लिए? क्या आप टिपरा मथा पावर एंजॉय करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं? आप टिपरा मथा इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि सीपीएम, कांग्रेस या बीजेपी में आपको ईएम, एमडीसी बनने का चांस नहीं मिल रहा है? आप क्यों टिपरा मोथा ज्वाइन करेंगे? टिपरा मोथा एक मूवमेंट है, पार्टी कम मूवमेंट ज्यादा है। पार्टी करना होता तो मैं कांग्रेस कभी छोड़ता नहीं, नेशनल पार्टी था, मैं प्रेसिडेंट भी था, सब फैसिलिटी था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि नेशनल पार्टी में टिपरा साहब के लिए बात करने के लिए जगह नहीं मिलता। देखो, नेशनल पार्टी मेरे पिताजी ने भी किया, मैंने भी किया, मां ने भी किया। बहुत प्लस पॉइंट्स है नेशनल पार्टी में जाने के लिए। अब रशिया में क्या हो रहा है बात कर सकता है, आप मंदिर के बारे में बात कर सकता है, आप जीएसटी के लिए बात कर सकता है, आप सब के लिए बात कर सकता है, लेकिन नेशनल पार्टी में टिपरासा का अधिकार के लिए बात नहीं कर सकता। तो अगर आप राजनीति में आया है पैसा कमाने के लिए, तो या फिर नाम बड़ा करने के लिए, तो नेशनल पार्टी सबसे आसान रास्ता है। लेकिन अगर आप राजनीति में आया है कि आपका बच्चा, आपका सेकला सिकली, आपका नेक्स्ट जनरेशन को अधिकार देने के लिए अगर आप राजनीति में आया है, तो नेशनल पार्टी टिपरा साहब को अधिकार नहीं देगा और कभी नहीं दे सकता है। जगदीश बाबू ने टीयूजीएस के बारे में बात किया। In Manipur, the overall law and order situation remained normal in the last 24 hours, even as security forces continued search and area domination operations across sensitive and fringe areas of the state. According to a release from the police control room, a major recovery of arms and ammunition was made in Bishnupur district on October 12th. The items recovered include rifles, pistols, ammunition, stun shells and bulletproof blades. Security forces also carried out intelligence-based operations to crack down on extortion and criminal activities. Two active militants, one from the KCP-PSC and another from the KYKL outfit, were arrested from Imphal West and Imphal East districts. In another operation, 19 kilograms of WY tablets were seized from a house in More, Tingnupal district. Meanwhile, 115 checkpoints were set up across Hill and Valley districts, though no detentions were reported. Authorities have urged the public not to spread rumors or share unverified content on social media, warning that legal action will be taken against those circulating fake or inflammatory material.
Government has also appealed to citizens to return any looted arms and ammunition to the nearest police station or security post at the earliest. We'll be right back after another break, so stay tuned for more news. तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? Welcome back. In the latest development in the probe into singer Zubeen Garg's death, 3 Assamese NRIs from Singapore, Jalong Sat Nazari, Parikshit Sharma and Siddhartha Bora appeared before the CID office in Guwahati today. According to sources, the trio are key witnesses in the case being investigated by the Special Investigation Team. SDGP and SIT head Munna Prasad Gupta told reporters that the 3 members of the Assam Association in Singapore were interrogated today. He added that notices have been issued to other members of the association and more are expected to join the investigation soon. The officer said the SIT is working round the clock to gather more evidence. 1 more member from Singapore is also expected to arrive soon. He revealed that Assam Police had visited the Attorney General's office in Singapore on September 30th to seek permission for further action and inquiry, and a positive response is awaited. Singapore Police too are conducting interrogations and coordinating with the Assam Police. On the issue of custody, Gupta stated that once the remand period is complete, the accused will be produced before the court as the law permits a maximum of 14 days remand. He appealed to Zubeen Garg's fans and the public to remain patient, assuring that the SIT is conducting the probe with utmost sincerity and diligence. देखना तो सभी चाहते हैं, आसाम के लोग अभी बहुत मतलब वो है, मतलब जानने के लिए इच्छुक है, तो देखते हैं अभी क्या आते हैं, और वो सिस्टम के ऊपर पूरा विश्वास है, अच्छा से सब कुछ होगा और जस्टिस मिलेगा। जो किस तरह का जस्टिस चाहते हैं आप लोग? अगर आप लोग सब जानते ही है क्या क्या चल रहा है अभी, तो वही चाहते हैं सब लोग। अगर वो लोग दोषी है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए, वही है। थैंक यू। There is nothing extra that I can say. Everything is there in the news. আমি সবে ফলো কৰি আছো, আমি সবে জাস্টিস বিচাৰো, আৰু আমি কোনেও এটো অসমৰ কোনো মানুহে এটো একসেপ্ট কৰিব পাৰা নাই যে এনেকুৱা এটা সিংগাপুৰত হেলদি মানুহ এটা লৈ গৈ পেলাই তাহাঁতি আমাক এনেকে ঘূৰাই দিব লগা হ'ল। এইটো বস্তু কোনেও আমি একসেপ্ট নকৰো, আৰু যোনে কৰিছে এটো হি শাস্তি পাবই। মই এজ আ ফ্ৰেণ্ড যিখিনি বস্তু ষ্টেটমেণ্ট দিব লগা আছিলে মই মোৰ ফালৰ পৰা দি দিছো, আৰু এতিয়া মই সবৰ লগত ময়ো জাস্টিসৰ অপেক্ষাই কৰি আছো। আজি 30 জন সিঙ্গাপুৰৰ পৰা আহি CID। That was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.